समस्त माने एग्जाम ପାଇଁ ପୁରା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଉंड ठीक से सुना जाउची? ओके के किछि व्यस्त हुअनी नमस्कार नमस्कार समस्तଙ୍କୁ आउ के किछि भी व्यस्त हुअनी देखो प्रिलिम तम पई एते भी कष्ट नुहे जदि तमे सब दिन सब सब्जेक्ट को टिके टिके पढिबो ताले प्रिलिम एते भी कष्ट नुहे माने व्यस्त हुअनी व्यस्त हेले को होबे ना सब दिन से एपड़ सेपड़ हे जिवो हैला तो पूरा काम रुहो डिसिप्लिन रुहो सब दिन किछि सारो हे जिवो आराम से ओके सो आमे टाइम माने वेस्ट न करिके आज डिस्कशन करबा मु भी चाहू छी तमर एटा जल्दी सरी जाऊ ओके सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मूवमेंट तो एटा आमे काली इठु सरी थिला हमर तो इठु आज आमे स्टार्ट करबा 26 नंबर क्वेश्चन नु तो फर्स्ट हो जे कि तमर स्वामी विवेकानंद रियल नेम वाज नरेंद्रनाथ दत्ता तो एटा तो ठीक अछि एउडा हमें सब माने देखि जे आ जानि जे भी छुआ बेडो हमें तांगर जो थिला हमर सोशल साइंस रे तो माने पढिचो सो राम एडा एई भला स्टेटमेंट्स भी तमरा आसीबो ओपीएससी आनी परिबो सेतरे किछि माने ये नाही कि ओपीएससी आनी बनी तो एडा भी आनी परिबो एमता स्टेटमेंट जोटा कि पूरा ही सिंपल थिबो ओके सो रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड इन 1897 एट वेल्लूर मठ ठीक अछि रामकृष्ण परमहंस रियल नेम वाज गदाधर चट्टोपाध्याय ठीक अछि तांगर माने रियल नेम्स गुडा को टिके टिके मन रखिबो बाकी एठी जो देइची एई भलिया स्टेटमेंट रे तमे टिके कंफ्यूजन हबो कि स्वामी विवेकानंद अपोज्ड आइडल वर्शिप कंप्लीटली मु तमु सब बळे कहिची कि जोटा एक्सट्रीम स्टेटमेंट देइची कंप्लीटली ओनली देन होची एराडिकेट ए गुडा को टिके भलो से मन रखिबो एंड एठी टिके भाबिबो कि से कोन सतरे अपोज करथिले नाही से अपोज केबे भी करि नथिले बाकी सुपरस्टिशंस बा जो माने रिलीजियस हेबा पई से कहिथिले कि रिलीजियस हुआ स्पिरिचुअलिज्म को एक्सेप्ट करो बट आइडल वर्शिप को से अपोज केबे भी कर नथिले से कहथिले सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड तो ए भला तमे मन रखिबो देन होची तागर दीटा बुक भी थिला राजा योग एंड कर्म योग तो एटा भी मन रखिबो ओके एंड तांकर स्पिरिचुअलिज्म विथ सोशल सर्विस ए पॉइंट भी मन रखिबो स्पिरिचुअलिज्म विथ सोशल सर्विस ओके then next question ame jiba consider the following statements regarding other reform तो आउ कोन को मूवमेंट्स हेतिला सेगुडा देखिबा सो फर्स्ट होची दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1886 बाय महात्मा हंसराज तो ए स्टेटमेंट ठीक अछि डीएवी स्टूडेंट्स जी सेटा जानि थिबो तो डीएवी रो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज देन वेद समाज वाज फाउंडेड इन लाहौर बाय केशव देखो अगेन ए क्वेश्चन टा हमर पूर्व क्लास रे भी हम डिस्कशन करचे कि वेद समाज तो केशव चंद्र सेन करथिले बट एटा लाहौर रे नुह एटा कोठी हेतिला कहलो देखि मते कोठी हेतिला मद्रास रे हेतिला ओके हां वेरी गुड अलीगढ़ मूवमेंट प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स ठीक अछि आर्य समाज स्प्लिट इनटू 1893 इनटू महात्मा ग्रुप एंड कल्चर्ड पार्टी एटा भी ठीक अछि तो मु तुमको कहिथिले ना कि हमर जो रिफॉर्म मूवमेंट गुडा का चलीथिला सेतरे सब स्प्लिट आस्तिला जेमिति कि ब्रह्म समाज रे भी स्प्लिट आस्तिला तमर आर्य समाज रे 1893 रे स्प्लिट आसीची तो ए जो स्प्लिट ता ही तार डिक्लाइन नो कारण थिला ओके तमे जत्ति कि मिडिवल हिस्ट्री हो तमर एंशिएंट रो हो बा मॉडर्न ने तमे देखिबो स्प्लिट जोठी आछे सेठी डिक्लाइन हेचे तो एटा तमे मन रखिबो ओके सो एटा थिला हां एटा मन रखो मॉडर्न एजुकेशन और साइंटिफिक एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स अलीगढ़ मूवमेंट ओके सो एठी टू स्टेटमेंट ता इनकरेक्ट अछि एटा मद्रास हबो तो आ बाकी रहिला जहा तमरो 1 3 4 इज करेक्ट ओके देन नेक्स्ट हमें जिबा तमरो 28 which of the following statements regarding early Indian journalists and reformers is not correct तो फर्स्ट तुमको पचार कि नॉट करेक्ट कोटा बाहर करिवो बाल शास्त्री जाम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म ए क्वेश्चंस ता तमरो आसीबा बहुत ही रेयर रे अछि
माने ऑलमोस्ट एटा आसी न पारे हैला तो तेणु जस्ट मु जेहेतु क्वेश्चन अच्छी तमरो सेटा मु डिस्कशन कर दोचे गोपाल हरि देशमुख यूज द पेन नेम लोकित वाड़ी गोपाल गणेश अग्रकर स्टार्टेड इन न्यूज़पेपर नेम्ड प्रभाकर देखो एटा महाराष्ट्र पीसीएस पे बहुत दरकार ओके तो तम पे एटा नो बाकी यूपीएससी पे एटा दरकार हे पारे बाकी हमरो ओडिसा पीसीएस रे एटा पड़िबनी ओके सो एटा होची सुभाकर सेटा तारो ये नाटा बाकी टी स्टेटमेंट ता रॉन्ग अछि बाकी एगुडा को ठीक अछि दर्पण एंड दिग्दर्शन वाज द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय दिस पर्सन ओके तो एटा ही तारो थिला बाकी एटा केते इंपोर्टेंट नुहो सेते हम बेसी डिस्कशन भी करूनी ओके नेक्स्ट टाइम जिबा 29 एई क्वेश्चंस गुडा को इंपोर्टेंट हमरो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एथिरे मैच करबा को देछि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी तो एथिरे तुमको से देछि कि मैच करबो जोद्रा कि हमरो सोशल सर्विस एंड लेबर मूवमेंट्स रे तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी तमर मन रखो गोपाल कृष्ण गोखले गोखले को ऊपर क्वेश्चन आसे एंड एटा को केबे हेले माने ए जो पर्सनालिटी किछि अछंती अछि तमर जते मॉडर्न हिस्ट्री जे पढैतिबे सेते कहितिबे कि माने लाइक किछि किछि पर्सनालिटी अछंती जेंति तांको ऊपर रिपीटेडली हमरो क्वेश्चंस आसुचे जेंति कि मॉडरेट की थिले एक्सट्रीमिस्ट के थिले गोखले को ऊपर क्वेश्चंस आसे देन अरविंद घोष को ऊपर क्वेश्चंस आसी जाए हैला तो ए भला किछि किछि क्वेश्चंस अछि जोडा कि तम पय माने सॉरी पर्सनालिटी अछि जहां जोडा तम एग्जाम पय बहुत इंपोर्टेंट ओके सो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले देन तमरो एथिरे अछि सोशल सर्विस लीग अछि एआईटीयूसी अछि सेवा सदन अछि तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटा की करथिले स्टार्टेड बाय एनएम जोशी ओके एंड एटा होची फर्स्ट नेशनल लेवल ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया एटा मन रखिबो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआईटीसीयू 1920 रे हेतिला एनएम जोशी एंड एटा होची फर्स्ट नेशनल लेवल ट्रेड यूनियन सेवा सदन 1908 बीएम मालवारी एटा करथिले एटा वुमेन वेलफेयर पे हेतिला सो तमरो क्वेश्चन गोटे अछि मेंस रे सिविल सोसाइटी तमे आरो एग्जांपल्स देई परिबो ओके कि प्री इंडिपेंडेंस रे हमर केमती कोन थिला सिविल सोसाइटी केमती काम करथिला लेबर राइट्स पे केमती काम करथिला तो तम दार एग्जांपल्स दे परबो ओके नेक्स्ट टाइम जिबा 30 consider the following statements regarding the Islamic reform movements Islamic reform movement तमरो अछि so Wahhabi movement and Faraji movement एदिटा बहुत ही important and एथरे देखि कि Faraji movement was started by Haji Sridhatullah in 1818 ने the Wahhabi movement was led by Said Ahmad Barloi एटा भी करेक्ट अछि एठी देछि कि the Faraji movement aim to remove non Islamic customs तो एटा भी somehow करेक्ट अछि बाकी हम एटा को प्योर करेक्ट कहि परिबा नै बट करेक्ट अछि ठीक अछि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कहि परिबा बट आ ऊपर भी बहुत सारा माने क्वेश्चंस आसे बेले बेले तो कॉन्फ्लिक्ट आसे बेले बेले बाकी फोर स्टेटमेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक कारण बेले बेले यूपीएससी एटा को करेक्ट स्टेटमेंट भी कहछि तो Wahhabi movement जो देछि एथरे देछि प्योरली रिलीजियस नो एथरे पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी थिला तो एठी देछि ना नो पॉलिटिकल एस्पेक्ट नै प्योरली रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट दीटा को जिंस ही थिला सो थ्री स्टेटमेंट ता तमरे इनकरेक्ट अछि बाकी 1 2 4 इज करेक्ट हला so these movements reflect the interaction between the religion and resistance in colonial India ओके तो मु एक क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा नोट ता देछि सेटा तम पे इंपोर्टेंट काहे कि ना तमे जानि परिबो कि क्वेश्चन तारो ब्रॉड व्यू कोन पय ए क्वेश्चन ता को पढिबा द्वारा हमर कोन हे परिबो कोठी टा को हम यूज करि परिबा एंड जदि प्रीलिम्स मु तुम जेमि कहितली कि प्रीलिम्स ए वर्ष टिके इवॉल्व क्वेश्चन पकेइबो तण तुमको ब्रॉड सेंस रे क्वेश्चन गुडा टिके प्रिपेयर हेबा पड़िबो ए जो मसिया बसिया एडा तो तुम पढिबो बाकी टिके जेमि इकोनॉमिक्स रे गोटे थाय ना रेंज कि से पचारिबनी कि जीडीपी केते हला एबे आ सेमती क्वेश्चन आसीबनी जीडीपी कोन होची डिक्लाइन होची ना इंक्रीज रे होची तो सेई भलिया क्वेश्चन आसीबो ओके then hochi consider the following statements regarding South Indian and regional reform movements तो South Indian and regional reforms movements of question ta so setri se deichi ki Satnami movement was started by Guru Ghasidas in Chhattisgarh
करेक्ट ठीक अच्छी एसएनडीपी मूवमेंट एम टू अपलिफ्ट द एवजा कम्युनिटी इन केरला तो जेहेतु एटा साउथ इंडिया रो देछि एंड रीजनल रिफॉर्म मूवमेंट ऊपर देछि तो छत्तीसगढ़ रे मन रखो गुरु घासीदास सतनामी मूवमेंट थिला बाकी एसएनडीपी मूवमेंट केरला रे थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन आद्यर इन 1875 नो 1875 जो देछि आद्यटा रे तारो हेडक्वार्टर टा शिफ्ट हेतिला बाकी एटा कोठी हेतिला तमरो यूएस रे फाउंड हेतिला मन रखिबो यूएस रे okay theosophical society and animation later became associated with the theosophical society so not correct deji to answer hobo tamaro 3 okay only 3 statement is incorrect तो एठी हमें theosophical society टा टिके important तो सेटा हमें देखिबा तो एसएनडीपी रो जो हमर थिला तार स्लोगन टा होची one caste one religion one god for all हैला then theosophical society 1875 and it was founded in New York USA not Adyar को shifted हेतिला capital जोटा कि 1882 रे animation join करथिले and ए सोसाइटी गुडा को कोन प्रमोट करूथिला स्पिरिचुअल यूनिटी and influenced by whom the Hindu philosophy मन रखो को फिलोसॉफी को इन्फ्लुएंस को फिलोसॉफी द्वारा इन्फ्लुएंस हेतिला हिंदू फिलोसॉफी द्वारा ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट आमे जिबा sorry next question jiba consider the following statements regarding various social reform movements and literature Indian National Social Conference was founded by MG Ranade and Raghunath Rao देखो MG Ranade again important personality तमे टिके मन रखिबो हैला so ये स्टार मार्क करके रखिबो अंक ऊपर क्वेश्चन आसे ओपीएससी रे then justice movement 1917 aimed to secure rights for non Brahmins in South India Stree Purush Tulana was written by Pandit Rambai and self respect movement was started by E.V. Ramaswamy Naikar तो कौन पचाची क्वेश्चन पचाची कि which is the correct answer actually एटा कौन होबो कि जो स्त्री पुरुष तुलना देखो ए क्वेश्चंस गुडाक जदि तमरो बाय चांस भी पड़ी गला मन रख एई भलिया स्टेटमेंट जोडा देई नथिबो कि टिके माने तुमको लागुथिबो कि स्टेटमेंट रे बहुत किछि इन्फॉर्मेशन अछि तो प्राय तो स्टेटमेंट गुडाक करेक्ट थाए से खेलिबो तो कोठी एई भलिया सिंपल जो क्वेश्चंस गुडाक देथिबो स्टेटमेंट गुडाक कि किए रिटन करछन तो बेसिकली एटा जानि होई न थाए देखो जेतल तमे हिस्ट्री पढथाओ ना कि आमे कोन पढथाय कि वेरियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कोन हैला यूरोपियंस मानकर कमिंग आमे पढि देले देन तापरे आम नेशनल मूवमेंट कोन चलथिला इंपोर्टेंट पर्सनालिटी के थिले तो सेति कि यूपीएससी पिला भी सेति कि पढि के जानते बाकी एठी कोन ने एमिति जदी क्वेश्चन आसिला तमे टिके माइंड को खेले कि ए क्वेश्चन गुडा सॉल्व करिवो ठीक हे जिवो कि स्त्री पुरुष एटा लिखिथिले कि तमरो ताराबाई सिंधे नॉट पंडित रामबाई ओके तो इटा लिखि नथिले तो 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि एंड 1 2 4 तमरो करेक्ट अछि देन नेक्स्ट हमें जिबा देखो एथरा आउ किछि पढिबार नै सेति पय म आउ एठी बेसी टाइम करूनी बाकी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ता मन रखिबो कि ईवी रामस्वामी नायकर पेरियार ओके तो तमरो फर्स्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट भी तमरो जो स्त्री पुरुष तुलना एटा जो ताराबाई सिंधे लिखिथिले एटा को कहा जाय फर्स्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट इन मॉडर्न इंडिया मन रख फर्स्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट इन मॉडर्न इंडिया होची स्त्री पुरुष तुलना एंड दैट वाज रिटन बाय ताराबाई सिंधे ओके देन नेक्स्ट हमें जिबा टेंपल एंट्री मूवमेंट्स इन इंडिया एबे न्यूज रे को टेंपल एंट्री चली छि न्यूज रे साबरीमाला कोन को आर्टिकल सेतरे जिवो को आर्टिकल क्वेश्चन को आसुची आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 अनटचेबल को आर्टिकल जाउची हमरो सेतरे माने जदी गोटे कोर्ट रे केस चली छि माने केस तो नो सुप्रीम कोर्ट ता निजरो वर्डिक्ट को अगेन रीड करिवो तो माने सेतरे को आर्टिकल्स गुडा को तमरो जिवो आर्टिकल 14 मैडम 25 जीव फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन और प्रैक्टिस जोटा रिलीजन रहउची 25 वर्सेस 26 आर्टिकल 14 जीवो कि नहीं जीवो मैडम हां 14 भी जीव राइट टू इक्वालिटी हां ओके राइट टू इक्वालिटी देन आर्टिकल 25 वर्सेस 26 हां 26 जीवो ओके
सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटा भल्ला से देखि कि जीवो साबरीमाला टा ओके तमर प्रीलिम मेंस इंटरव्यू तीनटा को पय इंपोर्टेंट हैला so which of the following statements regarding temple entry movement in India is not correct अच्छा आमे क्लास सरला परे आज गोटे विषय रे कथा हबा हैला तो तमने समस्त क्लास रे थाओ आमे परे क्लास सरला परे माने ए क्वेश्चन टा डिस्कशन हे साला परे आमे कथा हबा से विषय रे कि कोन आ गोटे न्यू इनिशिएटिव करबा मु गोटे जिंस भाबिची तमने जदी माने हां कहबो देन आमे स्टार्ट करबा ओके so which of the following statements regarding temple entry movements in India is not correct TK Madhavan started the temple entry movement in South India in 1924. Vaikom Satyagraha aimed at allowing lower caste access to temple roads. Yes, correct achi. Dr. B.R. Ambedkar led the Vaikom Satyagraha in Kerala. अच्छा ई स्टेटमेंट रे टिके रही जिबा कारण साउथ इंडिया देछि एंड डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर देछि Kalaram temple movement in Nashik was led by Ambedkar. ठीक अछि स्टेटमेंट बाकी डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जो मूवमेंट चलतिला सेटा प्राय तो चलतिला नॉर्थ इंडिया रे ओके नॉर्थ इंडिया महाराष्ट्र ए रीजन ने चलतिला बाकी एठी जो देछि केरला सेठी टिके क्वेश्चन आसीबो एंड ए स्टेटमेंट ता कोन हबो रॉन्ग हबो सो प्राय तो से साउथ इंडिया रे मूवमेंट रे नथिले वाइकम सत्याग्रह रे से एसोसिएटेड नथिले ओके साउथ इंडिया रो तो तेनु एटा हबनी एटा सीटा हबो रॉन्ग स्टेटमेंट बाकी आउ सब स्टेटमेंट तमरो करेक्ट अछि हैला एंड दलित आसेंस ए यार डिमांड कोन थिला ए जो कलाराम टेंपल रे जो मूवमेंट चली थिला तमरो डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर थिले कि दलित आसेस टू टेंपल प्रेमिसेस एंड ए जो मूवमेंट गुडा को कोन पय तमरो इंपोर्टेंट दलित अपलिफ्टमेंट सोशल इक्वालिटी स्ट्रगल्स तो एगुडा को रहि जे तमरो जदी रिजर्वेशन ऊपर इश्यू आसीबो बर्तमान प्रतिटी न्यूज पेपर रे तमे देखिबो कि जो रिजर्वेशन ऊपर जो हमरो चाली छि कि माने कोटा विद इन कोटा एबे चाली छि गोटे तो ए जो रिजर्वेशन ऊपर जेतेबे भी तमरा आसुछि ना तमे एई जिंस गुडा जदी लेखिबो तम मार्क टा और माने तम लेखाटा और एनरिच हबो बुझिहला नै कि कोन पय कि रिजर्वेशन दिया जायथिला तापर एटा केमिति गोटे पॉलिटिकल एजेंडा हैगला तो एटा टिके तमे जेहेतु सिविल सर्विस पिला टिके एमिति पढिबो कारण आगु तमे जाई देश संभाळिबो राज्य संभाळिबो तो तुमको टिके टिके भितर पढिया पडिबो एसएससी पिला भलिया तो पढिले हबनी हैला तो तमे टिके टिके पढिबो ओके सो मैच लिस्ट अंबेडकर जयंती भी मैडम हां आज बी.आर. अंबेडकर जयंती भी हाँ हाँ तो सेति तो बेसी मु कहूची तांको विषय रे आज ओके एंड मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 अच्छा मु टिके क्वेश्चन ता शीघ्र शीघ्र करूची काहे ना तम पाखरे भी माने बहुत तमन को टाइम एने बहुत दरकार आ आमे जदी गोटे टेस्ट सीरीज एते टाइम नबा ना तो आउ टेस्ट सीरीज आ अन्य मान जो अछंती से माने करि परिबेनी ओके मु सेतपे टिके जल्दी जल्दी करूची कि अधिक क्वेश्चन आमे जेमती कवर करबा okay so match list with match list 2 the correct answer kon hobo permanent settlement rayatri system mahalwari system paiko revolt okay so a statement the paiko revolt ame jani che odisha uprising mahalwari system mane gote land को different mahals रे divide करिवे okay then सेठू तापरे करा दे हबो तो mahalwari system कोन ना village as a revenue unit then royalty system कोन डायरेक्ट पेमेंट बाय रॉयट्स तो से माने जाय कि ब्रिटिशर्स मानु को पेमेंट करिवे एंड परमानेंट सेटलमेंट कोन ना रेवेन्यू कलेक्टेड थ्रू जमींदार से सेति पे ताको कोन को होतिला जमींदारी सिस्टम भी कहा जाउतिला बुझिला तो ए ओला तमे पढी के जिवो एंड एथिरा आ किछि नाही बाकी खाली गोटे गोटे ईयर दे देछि एंड के इंट्रोड्यूस करथिले सेटा दे देछि मन रखो जो हमर रॉयल्टी सिस्टम तारो जे इंट्रोड्यूस करथिले तांगा नाम मन रखिबो थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड ओके एंड एटा कोन अलाउ करथिला डायरेक्ट पेमेंट बाय फार्मर्स राइट्स माने रहथिला एंड से माने पेमेंट करूथिले ओके देन नेक्स्ट टाइम जिबा परमानेंट सेटलमेंट बा जमींदारी सिस्टम ऊपर क्वेश्चन आछि it was introduced in 1793 by Lord Cornwallis farmers directly paid revenue to the British government जमींदार्स had to pay fixed revenues before the sunset जोटा को हमें कहते sunset clause and जमींदारी policy system was replaced by दरोगा system एटा भी करेक्ट अछि एटा भी सॉरी एटा भी करेक्ट अछि बाकी एट जो देछि डायरेक्टली देउनो थिले फार्मर्स माने दोथिले काहा को जमींदार्स मानु को एंड जमींदार्स माने दोथिले ब्रिटिशर्स मानु को ओके तो सेति पय एटा कहै जायतिला जमींदारी सिस्टम ओके बुझि पारलो
तो तमरो टू स्टेटमेंट टा रॉन्ग अछि ओके सो एथर देछि करेक्ट स्टेटमेंट होबो 1 3 एंड 4 ओके नेक्स्ट टाइम में जिबा Consider the following statements regarding the royalty and the Mahalwari system. Royalty system eliminated the middlemen like the jamindars. कारण इठी royat माने directly जाइंकी Britishers माने को payment कले. तो इटा eliminated कहा कला middlemen मानु को middlemen किए थिले jamindars. Okay. Then Mahalwari system treated village as a unit called the Mahal. Correct अछि. सेटा को सेति पई Mahalwari system कहा गला. Then royalty system was introduced by ebbe just am पढ़ले Munro introduce करथिले Munro and Reed not Holt करनथिले Munro and Reed करथिले तो three statement ता wrong हे गला Mahalwari system was prevalent in Punjab and northwest provinces एटा को correct अछि बाकी only three statement is incorrect हैला तो एगुडा को मु बेसी डिस्कशन करूनी काहे कि ना एटा जस्ट आर गोटे जिंस ही पढिबो किए इंट्रोड्यूस करथिले then year टा केते and को एरिया रे and तार concept कोन तार अर्थ चारटा पॉइंट रे सब जगह सिस्टम सारिबो अधिक पढिबार ही नाही एग्जाम रे आसीबो ही नाही बुझियला तो जेत्ती की क्वेश्चन अछि सेत्ती की पढि दबो जेत्ती की तमरो देई चेथिरे सेत्ती पढि दबो एनफ ओके then next time जिबा consider the following statements regarding the pre 1857 revolts सन्यासी रिवोल्ट took place in माने प्री 1857 माने 1857 पूर्वरु जो रिवोल्ट गुडा को हेतिला ता विषय हमें पढुचे ओके सो सन्यासी रिवोल्ट took place in Bengal and Bihar okay it was led by मंजू साहा and भवानी पाठक देवी चौधरी तो करेक्ट अछि पाइकर रिवोल्ट was led by बक्सी जगबंधु a military commander of खोर्धा and तापर देछि the सन्यासी रिवोल्ट was inspired by the novel आनंद मठ देखो तमरो ओपीएससी रो एबे एते स्टैंडर्ड हेइनी कि से एमिति क्वेश्चन पकेइबो हैला ए भलिया क्वेश्चन पकेइ दबो ए स्टेटमेंट पकेइ दबो बाकी ए स्टेटमेंट टा को देखो ए स्टेटमेंट टा होची द सन्यासी रिवोल्ट वाज इंस्पायर्ड बाय द नोवेल आनंद मठ जदी गोटे क्वेश्चन जने पढिला एंड से खाली एमती जस्ट पढी गला से भाबियो कि होटा ठीक अछि आनंद मठ सन्यासी रिवोल्ट तो रिलेटेड ना बाकी देश देखो was inspired by the novel no आनंद मठ was inspired by the सन्यासी रिवोल्ट हैला तो एटा उल्टा हबो हैला आनंद मठ जेतेबेले लेखा हला सी सन्यासी रिवोल्ट रो इंस्पायर हेतिला ना कि सन्यासी रिवोल्ट आनंद मठ रो इंस्पायर हेतिला ओके तो फोर स्टेटमेंट एठी रॉन्ग अछि तो एठी देछि करेक्ट स्टेटमेंट हबो 1 2 3 ओके नेक्स्ट हमें जिबा नेक्स्ट कोन अछि क्वेश्चन ओके 38 which of the following statements regarding tribal revolts before 1857 is not correct okay so before 1857 ही हमें एबे अच्छे तो एठी tribal revolt केती हेतिला पागलपंथीज revolt was led by करम साहा and टीपू साहा in Bengal ठीक अछि कि पागलपंथी revolt हेतिला and जोटा को लीड करथिले तमरो साहा टीपू साहा and करम साहा and कोठी होतिला बेंगल ले okay and Ahom revolt was led by Gomadhar Kanwar against the British control in Assam. Ahom revolt तमने समस्त जानिछ आसाम रे हेतिला. Coal mutiny was led by Birsa Munda in Chotnagpur region. No, it is not Birsa Munda. It is like तांकर नाम कोन थिला कहलो बुढ़ा गोटे समथिंग कोन हां हां बुढ़ा भगत तो तांको ना थिला तो सी सीटा को लीड करूथिले मु नांटर सबले कंफ्यूज होला बुढ़ो भगत थिले सो कोल म्यूटिनी सेटा थिला एंड मोफ्लाटा तमे जानिचो समस्ते केरला रे ओके साउथ इंडिया तो पागलपंथी रिवोल्ट कोठी हेतिला बेंगल रे हेतिला साहा करम साहा टीपू साहा एंड इटा उटा एक्चुअली रिलीजियस ग्रुप थिला देन तापर इटा सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट रे कन्वर्ट हेतिला देन आहोम रिवोल्ट आसाम रे हेतिला कनवार ताकू लीड करथिले एथरे कोन पे हेतिला ना इट वाज अगेंस्ट ब्रिटिश अटेम्प्ट्स टू एंड द आहम रूल आहम मानकर रूल को एंड करिया पे जो ब्रिटिशर्स मानकर अटेम्प्ट थिला सेटा अगेंस्ट एटा हेतिला कोल म्यूटिनी 1831 and which was led by बुढ़ो भगत not बिरसा मुंडा and कोल ट्राइब जो माने कि छोटनागपुर झारखंड रीजन ने थिले
तो सेमाने एटा को लीड करथिले देन मोफ्ला अपराइजिंग मुस्लिम टेनेंट्स इन मालबार केरला रे एंड ईयर टा मन रखिबो ए जो किछटा 1857 प्री 1857 रिवोल्ट गुडा करो टिके तमरो कोन कहलो ईयर टा मन रखिबो कारण बेले बेले पकई दे कि क्रोनोलॉजी रे सजाओ हैला तो सेटा पकई दिथिला माने एबे पकोउनी आ आगुर पकोउथिला हैला तो सेति पय सेटा टिके मन रखिबो देन नेक्स्ट होची तमरो अगेन मैच देची Santhal rebellion, Indigo revolt, Gadkari uprising, Ahom revolt just एबे मु डिस्कशन कली देन इंडिगो रिवोल्ट इंडिगो कल्टिवेशंस को नेकी सांथाल रिबेलियन राजमहल हिल्स को नेकी एंड गडकरी उपजन कोल्हापुर मिलिटिया रिवोल्ट एटा तो एटा तो तमाने जानिचो तो आ कोन एथरे डिस्कशन करबा बाकी खाली जेमति कहली ईयर गुडा टिके टिके मन रखिबो एंड मन रखो ए जो रिवोल्ट गुडा थिला मेनली ड्रिवन बाय द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड लॉस ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स बोला ताकर जो एक्चुअली ट्राइबल रिबेलियन ट्राइबल रिवोल्ट म्यूटिनी एगुडा काहे की होउथिला काहे की ना सेमानकर जेतेबेले ट्राइबल राइट्स गुडा को एक्सप्लॉइट हैला तांकर माने जंगल जो जल जंगल जमीन हैला तो सेगुडा ऊपर जेतेबेले प्रभाव पड़ला बा इंपैक्ट पड़िला बा सेमानकु लागिला कि एमाने हमटु से सब जिंस गुडा नै जिबे हम राइट्स नै जिबे सेतेबेले सेमाने रिवोल्ट करबा आरंभ करले बाकी गोटे नेशनलिज्म टा तांको भितर एते आसी नथिला मो मतरे हैला तो नेशनलिज्म जिनछटा तांको भितर एते आसी नथिला सेमानकर राइट सेमानकर जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होतिला ता अगेंस्ट रे रिवोल्ट्स गुडा को होतिला ओके देन नेक्स्ट हमें जिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हो एंड मुंडा अपराइजिंग ओके so it is also known as Ulugan the great tumult it took place in Ranchi and Singhbhum regions it was led by Buddha Bhagat no it was led by kaha dwara Birsa Munda okay eta kaha dwara lead kara hotila Birsa Munda so एठी आंसर होबो 1 2 4 करेक्ट स्टेटमेंट होची एटिके माने हो एंड मुंडा टा होची केबे 1820 रो 1837 एंड एटा को एरियाज रे रांची सिंहभूम झारखंड रे बिरसा मुंडा एटा को लीड करथिले ओके देन नेक्स्ट हमें जिबा consider the following statements regarding Santhal and Indigo revolts again say pre 1857 revolts gudago Santhal rebellion Sidhu and Kanu Murmu British initially granted land to Santhals later exploited them Indigo revolt was unsuccessful ki कहला unsuccessful एटा Indigo revolt टा successful हेतिला ओके एंड एटा कोन हेतिला सक्सेसफुल हेतिला काहे कि ना farmers registered the forced indigo cultivation then तमरो नील दर्पण दीनबंधु मित्र लिखिथिले जोटा कि यार सफरिंग्स ऊपर थिला and it exposed British exploitation globally so indigo revolt influenced future peasant movements in India first peasant movement हम जदि कहबा that is indigo revolt okay जोटा कि इंडिगो कल्टिवेशन को नहीं कहथिला एंड एटा सक्सेसफुल थिला एटा अनसक्सेसफुल देचे ओके सो थ्री स्टेटमेंट टा रॉन्ग होचे देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द early revolts and historical context battle of Saraighat 1671 was fought between Ahoms and Mughals Lachit Borphan led the Ahoms and defeated Mughal forces Mofla uprising was against the British support to landlords and high rents. Pagalpanthis well again Pagalpanthis टा कौन थिला एटा इकोनॉमिक रिबेल्स ही नथिला एटा माने इकोनॉमिक रिबेल्स नो एथिरे रिलीजियस सॉरी रिलीजियस तो थिला ता से तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी थिला हैला तो एटा से माने गोटे जो थरे माने तांको रिलीजन तांको की अत्याचार करूची तो सेते बेले पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट माने किछ अलगा बुझो लाइक सेतेले होची कि आमो एरिया रे केही न आसिया दरकार हैला बुझियला नै सो दे लैटर बिकेम ए पॉलिटिकल एंड सोशल रेजिस्टेंस मूवमेंट पागलपंथीटा फर्स्ट गोटे से माने रिलीजियस ग्रुप थिले not purely economic rebels then later political and social resistance movements माने हेले हमें ऑलरेडी एटा को डिस्कशन करिचे एंड एई सब जो रिवोल्ट गुडा को एई सब अपराइजिंग गुडा को कॉर्नरस्टोन हेतिला कहारो रिवोल्ट ऑफ 1857 ओके सो नेक्स्ट हमें जिबा 43 which of the following statements regarding the causes of the revolt of 1857 is not correct देखो the General Service Enlistment Act forced Indian soldiers to serve overseas okay ठीक अछि overseas पठाया को चाहूतिले
Doctrine of lapse allowed annexation if there was no natural male heir. ठीक अछि. Okay. Oath was annexed under the doctrine of lapse by Delhouse. ए क्वेश्चन टा मु तम मानक पई रखिली. Okay. The Enfield rifle cartridge controversy hurt both Hindu and Muslim sentiments. एटा भी ठीक अछि. बाकी एठी मते कुह कि जो oath टा कोन doctrine of lapse रे जाइथिला कि ताको annexed करा हेतिला कोन पई मिस कोन पई गवर्नेंस गवर्नेंस पई. ओके. आ बाकी annexed रे का doctrine of lapse रे का करा हेतिला झांसी सतारा सतारा. झांसी हम्म. झांसी हाँ एटा तो तमे मन रखी देलो. बाकी एटा मन रखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स आसीतिला 1848 रे. मन रखो 1848 डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स एंड याकु की आनिथिले लॉर्ड डेलहाउसी. एंड जदि नो माने मेल हेयर केही नथिबे ताला अनेक्स करा हे जिवो. एंड आ गुटे जिंस एठी मन रखो कि ए जो एरियाज गुडा को से माने अनेक्स करथिले तार क्रोनोलॉजी टा मन रखिबो. फर्स्ट सतारा 1848 रे, संबलपुर एंड जयपुर 1849 ने, उदयपुर को 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854. ओके तो एगुडा का मन रखिबो. देन नेक्स्ट आमे जिबा कोन अछि नेक्स्ट कोन रहला एपाडे. हां की कोटा को कोठी बिलोंग्स करथिले नाना साहेब कोठी की नाना साहेब कोठी कानपुर 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 कुनवर सिंह बिहार बिहार वेरी गुड हैला. तो ए बेले तुम तो एडा जानि छ ओ एडा कोन आउ नाना साहेब अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकंड. एडा होची कानपुर. बेगम हजरत महल लखनऊ. कुनवर सिंह होची बिहार. खान रोहिला होची बार्ली लेड रिवोल्ट इन बार्ली एंड बहादुर शाह जाफर वाज डिक्लेयर्ड एम्परर इन दिल्ली. आउ जनरल भक्त खान को ए केवल बहादुर शाह जाफर को दिल्ली रो एम्परर भाबे डिक्लेयर करा गला. बट तांको कोनोसी पावर दिया गला नाही. एक्चुअली भक्त खान जे कि रियल मिलिटरी लीडर थिला दिल्ली रे हैला. तो एटा रखा गला. देन नेक्स्ट होची तमरो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. इमीडिएट कॉज कोन थिला. फर्स्ट तो से राइफल गोटे तमरो हैला जोथरे कि पिग फैट थिला काउ फैट थिला सेति पई. तो एटा ठीक अछि. देन मंगल पांडे अटैक द ब्रिटिश ऑफिसर्स. एटा भी ठीक अछि. बाकी मंगल पांडे was executed on 9th May 1857. No, it is 8th April. एटा समस्त तो मन रखिथिबो कि मंगल पांडे 8th April 1857 हैला एप्रिल एटा. तो इठी डेट रे टिके भूलभाल अछि. तो सेटा होछि फोर स्टेटमेंट ता रॉन्ग अछि. तो करेक्ट स्टेटमेंट 1 2 3 इज करेक्ट. तो मन रखो 1857 रिवोल्ट रो इमीडिएट कॉज कोटा सेटा मन रखिबो. एग्जाम रे पढी पारे हैला. एगुडा important question. Consider the following statements regarding the spread of a revolt of 1857. The revolt began at Meerut on 10th May 1857. ठीक अछि. 85 sepoys were punished with 10 years imprisonment. ठीक अछि. The second became the actual military. मु जस्ट एबे कहली कि तांकू दिल्ली रे केवल एम्परर भाबरे रखा गला. भक्त खान को रखा गला मिलिटरी लीडर भाबरे. तो ये स्टेटमेंट ता तो तमरो इनकरेक्ट अछि. इस्ताहार वर इश्यूड टू प्रमोट यूनिटी अमंग हिंदू एंड मुस्लिम्स. एटा ठीक अछि. ओके सो नॉट करेक्ट देजी. तो 3 स्टेटमेंट हबो ओनली 3 हैला. देन नेक्स्ट टाइम जिबा consider the following statements regarding the suppression and end of revolt 1857. John Nicholson suppressed the revolt in Delhi. Yes, correct. Then Lawrence Lucknow. Hugh Rose होची तमरो रिवोल्ट ऑफ कानपुर. नो कानपुर रे के थिले. कानपुर रिवोल्ट की संभाळतिले के कैम्पबेल. मन रखो Campbell. The revolt ended in 1858 after the suppression of Gwalior. तो ग्वालियर को सरप्रेस कला परे ही तमरो एक्चुअली रिवोल्ट एंड हेतिला 1858 रे. बाकी कानपुर हां एटा तमे कोन करबो एटा तमर समस्तंगर तो थिबो. तमे ए पीडीएफ रे ही मार्क कर देबो. दिल्ली ओके लखनऊ लॉरेंस L for लखनऊ L for लॉरेंस. कानपुर के कानपुर
आ के रे भी तुम ओडिया मन रखिबो कैम्पबेल एंड ही रोज होची झांसी एमिति मन रखिबो झांसी रोज ओके एंड इटा केबे सरिला ग्वालियर रे जेते सेपरेशन हैला 1858 एंड डेट ता मन रखिबो जून 20 ओकला ए डेट ता टिके मन रखिबो कारण पकई पारे जून 20 1858 रे एबे कोन करछि ना आ ईयर रे करूनी तुम देखिबो प्रीवियस 2 इयर्स रे तमरो टिके डेट ऊपर जाउछि से तो तमे सेटा भी प्रिपेयर हे कि जाइथिबा so ग्वालियर रे 1858 जून 20 then next होची आफ्टर ए जो 1857 रिवोल्ट हला परे कोन हला तमरा आर्मी रे रिस्ट्रक्चरिंग हला ओके ईस्ट इंडिया कंपनी रो रूल ईस्ट इंडिया कंपनी रो कोन हला रूलिंग सरिला क्राउन हाथ को गला हला आफ्टर मथ ऑफ 1857 रिवोल्ट एटा तमे जब पढिथिबो एटा जानिथिबो हला नेक्स्ट होची which of the following statements regarding the government of India act 1858 is not correct 1858 ऊपर देछि and not correct पचाछि the East India Company was abolished after the revolt of 1857 yes correct एबे just कहली power was transferred to the British Crown through Queen's proclamation yes Lord Dalhousie became the first viceroy of India तमे जदि पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढिथिबो ताले ए पॉइंट गुडा केबे भूल करबनी इट वाज की हेतिला फर्स्ट वाइसरॉय कैनिंग हेतिला वेरी गुड हैला कैनिंग so the act marked the beginning of crown rule in India yes correct तो C statement ता कोन अछि wrong अछि तो they is not correct तो C statement होबो then next होछि मैच करबो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तमरो केबे कोडा हेतिला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ता को केबे हेतिला एटा क्वेश्चन नंबर केते 49 ओके चाहो म 50 ही चाहूतली करबी बोली আজি हे गला 49 क्वेश्चन नंबर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोठ हेतिला वो समझते लंडन लंडन 1866 1866 लंडन हाँ 1866 लंडन पूर्ण सार्वजनिक सभा 1870 पब्लिक 1884 रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल एसोसिएशन एंड मद्रास महाजन सभा हैला तो आर इंपोर्टेंट जिंस गुडा को होची कि यार तम जो ऑब्जेक्टिव्स गुडा को बा कोन आर एम थिला सेटा टिके टिके पढी के जीवो आ सहित एटा टिके टू डिस्कस द इंडियन इश्यूज इन ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पूर्ण सार्वजनिक सभा तो एटा कोन होइतिला it work to represent the Indian public opinion हैला INA Indian National Association founded by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose तो एटा कोन होइतिला uniting Indian across the regions and religions हैला तो ए जो तांकर एम कोन तांकर ऑब्जेक्टिव कोन सेटा टिके पढी के जीवो कारण सेटा क्वेश्चन आसी पारे हैला तो तुम जेमति कहितिली कि एग्जाम पूर्वरु एटलीस्ट 3 टाइम्स ए पीडीएफ टा को पढी के जीवो हैला Consider the following statements regarding the changes after the revolt of 1857. अब तुम्हारा prelim कितने days रहला? कितने days रहला? जून कितने जून 7 रे ना? yes ma'am हे जीवो ढेर टाइम अछि पढी दबो हे जीवो हैला किछि एते व्यस्त होबनी तमने माने जदि एग्जाम आसला बेलकु तमने कोन हुए ना गड़बड़िया होई जाय कि हां इटा हबो ना नै सेटा ना किछि व्यस्त हन जदि हबार थिबो ना सियोर हे जीवो जदि हबार नथिबो जते पढिले भी हबोनी हैला so consider the following statements regarding the changes after the revolt of 1857 हां हबार नथिबो माने तमे तमरो काम करिवो रेस्ट ऑन गॉड हैला ता हतरे कोन अछि सी जानथिबे किंतु तमे तम कर्तव्य तम स्ट्रेटजी तम स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क सब लगेबो हैला so consider the following statements regarding the changes after the revolt of 1857 the number of Indian soldiers in the army was reduced. तो 1857 परे कोन चेंजेस आसिला फर्स्ट तुम कहली तुमको ईस्ट इंडिया कंपनी रो रूल सरी के कहा हाथू गला क्राउन हाथू गला आर्मी रे रिस्ट्रक्चरिंग हैला देन गवर्नेंस स्ट्रक्चर रे भी चेंजेस आसिला सेंट्रलाइजेशन हैला पावर ओके तो एगुडा सब हेतिला then the number of Indian soldiers in the army was reduced Indian soldiers मानकर numbers को reduce करा गला then next आउ कहला more British soldiers were included yes काहे ना कंट्रोल तांकर अधिक दरकार थिला एंड एटा काहार रिकमेंडेशन ने होतिला पील कमिशन न रिकमेंडेशन ने होतिला
तापर से देछि एते सारा कहि सल्ला परे फोर्थ स्टेटमेंट दोछि द स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी रिमेन्ड अनचेंज्ड जदि एतक चेंजेस हेछि तार तो रिस्ट्रक्चर हेछि ना तो अनचेंज्ड केंति रहिला तो एठी फोर्थ स्टेटमेंट ता रॉन्ग अछि बुझला नै सो 1 2 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट ओके So next question ame jiba consider the following statements regarding the failure of the revolt of 1857 and opinions. So se कहिछि कि काहे कि 1857 revolt failure हैला काहे केते सक्सेसफुल हैला नाही तो सेटा से पचाछि the revolt was limited mainly to North India. Okay correct statement केवल North India रे ही हमर revolt रही गला एते होल जो पैन इंडिया मूवमेंट हे परला नाही एंड सेथिरे भी कोऑर्डिनेशन अभाव रहिला लीडर्स मानक भितरे करेक्ट अछि देन बीडी सर्वाकर कॉल्ड इज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस एटार भी नेकी बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट अछि हला सी तो कुहंती बाकी किछि जण कुहंती नाही देन जेतु एटा पैन इंडिया नथिला तो एटा को फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को आजे किछि 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 मत देंते बाकी एटी देछि कि इट हैड ए क्लियर नेशनल पॉलिटिकल प्रोग्राम जदि क्लियर थिला ताल त हमें सक्सेस पाई थांदे ना हमें फेलियर हेचे माने दैट मींस एटा क्लियर नथिला ना कि एटा नेशनल थिला जस्ट रीजनल बेसिस रे नॉर्थ इंडिया रे ही रहि गला ओके तो सेति पई कि एटा 3 स्टेटमेंट हमरो रॉन्ग हबो बुझियला नॉट करेक्ट देछि तो ओनली 3 स्टेटमेंट okay next ame jiba consider the following statements regarding the peasant uprising and leaders after 1857 Deccan revolt 1875 and eta कोठी थिला प्रायतः डेक्कान ने हैला डेक्कान वेस्टर्न इंडिया रे भी चलथिला डेक्कान रीजन ने चलथिला पबना रिवोल्ट ईशान चंद्र रॉय बेंगल ले स्टार्ट करथिले रामसी पेजेंट फोर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय वासुदेव बलवंत राय फाड़के तो सेटा करथिले तो देखो ए क्वेश्चन टा को भूली जाओ बाकी 2 स्टेटमेंट और 4 स्टेटमेंट टा देखो एठी देला ईशान चंद्र रॉय बेंगल एटा को लीड करथिले एठी देला कि दादा भाई नारोजी होचंदी तार फाउंडर तो केबे बे एटा हेई नथिबो बेंगल ले दादा भाई नारोजी केबे बे माने सेठी रिवोल्ट करिया में तांको लोकल लीडर टिके दरकार तो ईशान चंद्र रॉय ही सेठी फाउंड करथिले एंड सेठी से तांगर बेंगल ले चलेथिले दादा भाई ना तो इनते स्टेटमेंट देले कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आको हमें कहू तो सेथिरे तमे कहब ना टिकी माने देखिबो कि कहां प्रॉपर्ली कोठी होबा बेले बेले टाइटल लु भी क्वेश्चन सॉल्व करिवे हला तो देखि करबो एठी 4 स्टेटमेंट ता कोन अछि रॉन्ग अछि 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर तो एठी तमरो कोन अछि आरो एटा ये हां एटार जो पबना रामसोई पिजेंट फोर्स कला देन तमरो पबना रिवोल्ट ईश्वर चंद्र रॉय करथिले विरोधी राजा तांको भी टाइटल दिया हैतिला एंड एटा कहा अगेंस्ट रे थिला इट वाज अगेंस्ट ए हाई रेंट्स एंड इलीगल एविक्शंस इन बेंगल तुम कहितली ना कोन पाई एटा हेछि सेटा टिके मन रखिबो ओके देन होछि जो हमरो रामसोई पिजेंट फोर्स थिला तार होछि कि फाइट तारो एम थिला फाइटिंग ब्रिटिश रूल एंड एक्सप्लॉयटेशन हला तो दादा भाई नारोजींकर पबना रिवोल्ट सहित तो किछि भी नथिला बाकी दादा भाई नारोजींकर तमाने टिके जो ड्रेन थ्योरी हला देन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडियन एमपी एगुडाटी मन रखिबो एटा तो तुम जानिछो तांकर पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया सेतरे से ड्रेन थ्योरी डिस्कशन करथिले हला सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन तांकर ऊपर क्वेश्चन दादा भाई नारोजी को ऊपर क्वेश्चन he was the first Indian member of parliament in Britain हाँ एठी दे देथिबो कि फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया तो करेक्ट एटा करेक्ट स्टेटमेंट हबो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हबो फर्स्ट एमपी इन इंडिया नो दैट ब्रिटेन ने तांगर फर्स्ट इंडियन एमपी होचंदी किए तमरो दादा भाई नारोजी he gave the drain of wealth theory in एटा ठीक अछि देन होची he started the newspaper अमृत बाजार पत्रिका नाही एटा तमरो शिशिर कुमार घोष लिखितिले ये नो देन he is known as the grand owner एटा त हम डिस्कशन करछे बाकी सी स्टेटमेंट ता तमरो कोन छी रॉन्ग अछि ओके तो एटा होची माने सी करनथिले देन तापरे आउ किछि दादा भाई नारजी को ऊपर देखिबा कि सी एस्टिमेटेड करथिले इंडिया रो नेशनल इनकम इन 1876 तो सेति पई तांको फादर ऑफ इंडियन नेशनल इनकम भी कहा जाय हला एटा कोई क्वेश्चन में पढुची तमर एसएससी 19 न अछि सेतरे भी पढी पारे आ तमर जो ओसीएस रे भी पढी पारे हला नेशनल इनकम
then first person to use the term Swaraj से भी करथिले and तांकर गोटे न्यूज़पेपर थिला रस्त गुप्ता and Voice of India एगुडा तांकर थिला then होची आउ कोन थिला he acted as a bridge between Indian nationalism and British politics हला जेतु फर्स्ट इंडियन एमपी थिले तो तांको ब्रिज को जाय बिटवीन द इंडियन नेशनलिज्म एंड ब्रिटिश पॉलिटिक्स हला तो से रोलटा करूथिले देन होची इंडियन लीग बॉम्बे प्रेसिडेंट शिशिर कुमार घोष एबे जस्ट हमें डिस्कशन करले एटा एते इंपोर्टेंट नाही हला तो एटा एते डिस्कशन जस्ट तमर देइछि जति सति पढि दबो मु जोडा इंपोर्टेंट नाही सेगुडा को जाहु नाही एते बेकार तमर टाइम वेस्ट ना पढिबो ना जेटा पढि किछि लाभ अछि हला जस्ट टिके टिके अछि सेटा देखि देखि दबो 55 okay consider the following statements regarding Bombay Presidency Association and Madras Mahajana Sabha. Bombay Presidency Association was founded in 1885. Its founder included Ferozda Mehta, Keti Telang, Bardin Taibji. Madras Mahajan Sabha was founded in 1884 and Madras Mahajan Sabha was founded by Dadabhai Naroji. Actually, a statement are a wrong statement mate laguchi kana Madras Mahajan Sabha Dadabhai Naroji to nathile baki ame explanation dekhiba ki kon achi Bombay Presidency Association eti Mehta thile Telang thile Taibji thile then hochi it worked for legal and political rights of Indians. Then Madras Mahajan Sabha was formed in Madras Presidency 1884 re heitila and eitar founder thile kiye na tamara Subramanyam Iyer, Anand Charlu and Bira Raghavachari M Bira Raghavachari. So it a South Indian political interest ko asutila and ethire Dadabhai Naroji not its a founder tadar founder nathile eta pray to South Indian jo political policy ba politics thila ta upare eta kamo koruthila okay and ethire kon hoithila na they became the feeder organization for INC leadership then a pore hi INC tamar asila तो सेतेले माने कोन कले ना जो किछि किछि माने ऑर्गेनाइजेशन थांती जो माने कि किछि रूल्स ताकू सेव्स करिवार हेल्प करंती सेडा कोनती फीडर ऑर्गेनाइजेशन तो ए जो ऑर्गेनाइजेशन गुडा को आईएनसी को हेल्प करथिला सपोर्ट करथिले ओके देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द INC is not correct. Alan Octavian Hume founded the INC in 1885. Correct statement या incorrect statement? কি কই পারিব ठीक अछि मैडम First session was initially planned in Pune but shifted to Bombay due to play. Okay, correct statement. The first session had equal representation of a men and women. No, men माने ही थिले अधिक and सेतिरे two Muslims थिले मने रखो two Muslims थिले no women थिले no women kehi bhi women nathile okay so INC was formed to provide a peaceful platform for discussing national issues okay so baki eta kintu kono gote c statement ta acha tame कहबो मैम कि एठी तो पीसफुल केमते किछि नथिला ह आगुर जेतले 1885 रे जेतले फॉर्म हेलानी एटा गोटे पीसफुल प्लेटफॉर्म ते थिला बुझिला नहीं तापर तमरो जो सुराट स्प्लिट हैला सेतेले तमरो जाय कि मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट मान आसिले एंड सेठी को आगला कि नाही नाही हमकु आ से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अनुसार हमकु से माने इंडिपेंडेंस देबे नाही हमकु फ्री करबे नाही हमकु मास प्रोटेस्ट करिवार अछि माने एक्सट्रीमिस्ट स्टेट्स गुडा को नेबा को अछि तो सेतेले जाय कि आसिला नहले एटा गोटे पीसफुल प्लेटफॉर्म इनिशियल स्टेज रे थिला ओके तो सेति पई डी स्टेटमेंट टा करेक्ट अछि बाकी एठी जो दैछि कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू मेन एंड वुमेन एटा इनकरेक्ट अछि कारण एथिरे वुमेन मानकर रिप्रेजेंटेशन ही नथिला दुई जण मुस्लिम्स थिले बाकी 72 या समथिंग तमरो डिग्निटरीज माने थिले ओके एंड हां तमरो मॉडरेट फेज टा होछि कांग्रेस रे 1885 रो 1905 ओके एटा मन रखिबो then next होछि हमरो कि 1896 कलकत्ता सेशन 1929 लाहौर 1911 कलकत्ता 1937 फरीदाबाद 1896 रे कोन हेतिला वंदे मातरम सॉन्ग फर्स्ट टाइम हां then 1929 ने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर
देन आपर 1930 रे ओडिसा कथा ओडिसा हिस्ट्री पळे आसला देन 1911 कलकत्ता तमर कोन हितिला जनगण मन सॉन्ग फर्स्ट टाइम एंड 1937 फैजापुर फर्स्ट रूरल सेशन एटा हेतिला एंड आउ गोटे आईएनसी रो सेशन मन रखिबो कि कोठी स्प्लिट हेतिला कोठी से माने अगेन यूनाइट हेले देन महात्मा गांधी को सेशन टा करिथिले तो एटा टिके मन रखिबो कारण से गोटी सेशन रे प्रेजाइड करछन्ती सेटा मन रखिबो हला तो ए भले क्वेश्चंस गुडा आईएनसी सेशन नु तमे मन रखिबो then next आमे जिबा कि consider the following statement regarding the theories of the formation of the INC अच्छा गोटे इंस्टीट्यूशन जेतेबेले फॉर्म हुए किछि किछि थ्योरी सेतरे लागे थाए कि को थ्योरीज को नै कि तार जो काम गुडा को सेटा को थ्योरी के होची जेमति कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी वाज गिवन बाय लाला लजपत राय कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी प्रपोज्ड बाय केपी दत्त लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय गोपाल कृष्ण गोखले लॉर्ड डॉफ्रिन praised Congress as a symbol of loyalty no मन रखो गोटे जिंस कि आईएनसी रो क्वेश्चन को भला हे परिबो आईएनसी रो क्वेश्चन हे परिबो फर्स्ट तार सेशंस को नै के सेशंस कोन ना किए प्रिजाइड करथिले को सेशन ने स्प्लिट हेतिला को सेशन ने यूनाइट हेतिले महात्मा गांधी रो कथा जेमति कहिली देन तांगर क्रोनोलॉजी कोटा फर्स्ट सेशन ने कोन हेतिला सेकंड सेशन एमदी सेशन को नै के आउ गोटे आसी परिबो कि आईएनसी को नै कि काहारो स्टेटमेंट जो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट गुडा को थिला जेमिति कि डॉफ्रिन कर हैला सी कोथले एटा गोटे सेडिशन करिया पई हेची कि कोथला कि तमरो पॉलिटी रे भी देखितिबो कि आईएनसी केवल ही सब जिंस डिसीजन नउची तो से जो स्टेटमेंट गुडा को किए कहितला ता ऊपर भी गोटे क्वेश्चन हेई परिबो बुझियला तनु एमिति तमे पढिबो कि को स्टेटमेंट तो एटा को से कोन कहउतिले कि फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोली कहउतिले लॉर्ड डॉफ्रिन तो से जेटा को प्रेज करनथिले तो फोर्थ स्टेटमेंट ता तमरो इनकरेक्ट अछि देन नेक्स्ट होची एर्ली आईएनसी सेशंस गुडा का हमें देखिबा फर्स्ट सेशन 1885 डब्ल्यूसी बनर्जी करेक्ट अछि सेकंड सेशन 1886 434 डेलीगेट्स थिले एंड दादा भाई नारोजी थिले थर्ड सेशन 1887 जॉर्ज यूले थिले एंड 18 सेशन होची देखो जॉर्ज यूले होचंदी जने ब्रिटिश पर्सन तो सीए थिले फर्स्ट ब्रिटिश पर्सन जोटा कि फोर्थ रो ना कि थर्ड रो बुझियला नहीं थर्ड सेशन ने किए थिले ना तमरो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हेतिले फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैला मन रखो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हेतिले तमरो थर्ड सेशन दैट इज 1887 एंड से किए थिले तमरो बदरुद्दीन तायब जी थिले फर्स्ट मुस्लिम तायब जी मन रखि देबो हेजो तायब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थिले एंड ए जो डेलीगेट्स एगुडा मन रखिबा किछि भी दरकार नाही खाली फर्स्ट सेशन मन रखि देबो सेते हैला एगुडा मन रखिबा किछि भी दरकार नाही ओके next consider the following statement regarding the latter INC session and developments 1916 Lucknow session reunited the moderate and extremist and signed the Lucknow Pact is correct 1917 Calcutta session was presided by Annie Besant the first woman president 1925 Kanpur session was presided by Sarojini Naidu first Indian woman president is correct 1924 Belgaum session किए करिथिले महात्मा गांधी महात्मा गांधी एंड एटा मन रखो कि ओनली सेशन आउ महात्मा गांधी और सेकंड सेशन किछि करि नांती ओनली सेशन महात्मा गांधी को द्वारा ओके मन रखिबो एटा समझते ओनली सेशन महात्मा गांधी को द्वारा दैट इज बेलगांव सेशन एंड एटा मन रखिबो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किए फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की एंड को सेशन ने को ईयर रे से करथिले हैला तो सेशन रिलेटेड क्वेश्चन एमितिया ही आसीबो नेक्स्ट टाइम जिबा which of the following statement regarding Alan Octavian Hume and INC formation is not correct deji Alan Octavian Hume was a retired British civil servant is correct he is known as the father of Indian ornithology ornithology means bird ko upare hala bird ko upare he founded the INC with the aim of promoting armed rebellion against bhai si kai karibo armed rebellion okay
तो सी से मु जेमती कहितिले कि तारो इनिशियल स्टेज रे कोन थिला पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन हला पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन थिला जोठी पॉलिटिकल डिस्कशन हबो तो आर्म्ड रिबेलियन एगुडा करिया पे सेडा करो माने से कर नथिले ओके he played a key role in organizing Indian leaders in common platform on a common platform तो सी स्टेटमेंट ता तमरो रॉन्ग अछि कि आर्म्ड रिबेलियन पाइन हुए सेटा मॉडरेट फेज ही चली थिला 1905 जाय ओके देन तांको हाउ कोन रहला एपडा रहला consider the following statements regarding Ilbert bill controversy in 1883 Ilbert bill 1883 मन रखबो it allowed Indian judges to try the British citizens yes correct it was strongly opposed by British community in India yes correct it was fully chalo it exposed the racial discrimination in the British rule yes correct bucket they fully implemented without any changes एटा होची wrong statement काहे की कहूची कि एटार माने इल्बर्ट बिल कोन पे आसिला देखो बिल हे कि ही रहिची ना कि सेटा को एक्ट से माने करई देले बिल हे कि रहितिला एंड सेतरे से कहले कि इंडियन जजेस माने ट्राई करि परिबे काहा को ब्रिटिश सिटीजन्स माने को एतरे रागी गले को माने ब्रिटिश कम्युनिटी माने जो माने इंडिया रे रहउतले कि हमु को केमिति गोटे इंडियन जज करबो ओके तो सेथि पई एटा को कोन करा गला ना तमरो उठे दिया गला कि नाही एई आउ ए बिल ता काम करबो नाही कैंसल्ड कर दिया गला मॉडिफाइड कर दिया गला ओके तो ए स्टेटमेंट ता तमरो रॉन्ग अछि ओके तो एतरे से कोन देछि कि करेक्ट स्टेटमेंट हबो तमरो कोन 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 अछि 1 2 एंड 4 हला तो 3 स्टेटमेंट ता कोन अछि इनकरेक्ट अछि नेक्स्ट टाइम जिबा 1906 कलकत्ता सेशन it was presided over by Dada Bhai Naroji resolution on Swadeshi boycott national education were passed yes correct moderate and extremist united after this session it marked an ideological shift in Congress okay तो मते कुह 1906 कलकत्ता सेशन ने कोन हितला किए सिटा को करथिले माने प्रिजाइड करथिले कहि परिबो दादा भाई दादा भाई हाँ दादा भाई नारोजी करथिले बाकी सबुटो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ भितर होची कि स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन एगुडा को ता ऊपर रिजोल्यूशन पास करा हैतला जोटा कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट तमानो पाई एंड एटा उडे शिफ्ट करथिला क्वाडी कि ना मोर असर्टिव नेशनलिज्म आडके एंड आफ्टर दिस सेशन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट मानको भितर स्प्लिट हैतला ना कि से माने यूनाइट हैतिले आपरे असला कोन सुराट सेशन ने से माने कोन स्प्लिट हे गेले ये कहै छी कि एठी यूनाइटेड हे गेले यूनाइटेड लखनऊ रे जाय कि यूनाइटेड हेले ओके तो सेटा तो नुहो माने जस्ट पढी के आसिले एंड दिस वाज टर्निंग पॉइंट इन द कांग्रेस आइडियोलॉजी ओके तो एटा मन रखिबो देन नेक्स्ट टाइम जिबा त्रिपुरी सेशन एटा भी थर एग्जाम रे पढुचे एंड एसएससी एग्जाम गुडा करे एटा बहुत पड़े त्रिपुरी सेशन टा तो 1939 सुभाष चंद्र बोस वाज डिफीटेड पटाभी सीताराम जहा को गांधी सपोर्ट करूथिले ओके इन त्रिपुरी सेशन बोस कंटिन्यूड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट नो जेहेतु गांधी सहित आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आसिला से रिजाइन कर देथिले देन तांको रेजिग्नेशन परे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेले प्रेसिडेंट जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस एटा तो माने जानिचो बाकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि कारण बोस रिजाइन कर देथिले बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन ही एंड गांधी ओके तो सेति पई तांको रेजिग्नेशन पर राजेंद्र प्रसाद हेले कोन प्रेसिडेंट ओके तो त्रिपुरी सेशन मन रखिबो 1939 सुभाष चंद्र बोस रिइलेक्टेड हेतिले पटाभी सीताराम को डिफीट करिके एंड पटाभी सीताराम कहारो कैंडिडेट थिले गांधी कर कैंडिडेट थिले ओके मैडम अच्छा गांधी ऊपर गोटे स्टेटमेंट देथिले कोन से स्टेटमेंट ता जानिचो कि गांधी आईएनसी ऊपर गोटे स्टेटमेंट देथिले कोन तम पई गोटे होमवर्क रहला हैला कि गांधी आईएनस को नै कि कोन कहितले कि जतले इंडिया इंडिपेंडेंस पाइतला तापर से आईएनस को नै कि कोन कहले ओके एंड काहे के आइडियोलॉजिकल आईएनसी को डिसबैंड कर दिया जाऊ बोली आप इंडिपेंडेंस पर कुछ रोल नहीं मैडम गोटे डाउट थिला 1906 जो कहले कलकत्ता सेशन रे कांग्रेस तार ऑफिशियली डिक्लेयर करथिला कि ता गोल एज स्वराज बोली कोन
ମାନେ 1906 ସେସନ ରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ନା ତା ଗୋଲ ସ୍ୱରାଜ ତା ଗୋଲ ବୋଲି। ହଁ ନା ନା ସ୍ୱରାଜ ତା ଗୋଲ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ତ କରିଥିଲା, ବାକି କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲି ସେମାନେ କରୁନଥିଲେ। ବାକି ସେଇ ଉପରେ ଅଧିକ ସାରା କାମ ତ ହଉଥିଲା କି ହଁ ଆମେ କରିବା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା କରିବା, ବାକି ତାର ଆଇଡିଓଲୋଜି ସେ ପଏଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା କି ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଏଇଗୁଡା ଆଚିଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁଁ କହିଲି ନା ସେତେବେଳକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ପ୍ଲିଟ ଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା କି ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଥିଲା କି ଆମେ ମାଗିବା, ଆମେ କରିବା, ଆମେ ମଡରେଟ ୱେରେ ମାଗିବା, ଆମକୁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଝାମଲା କରିବାନି। ତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଥିଲେ, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ସେମିତି କହିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେବେନି, ଆମକୁ ମାସ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡାକ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହେଲା, ତ ତାପରେ ସେମାନେ କାମ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ସୋ ଓକେ 65 ନମ୍ବର ସେସନ ଆମର ଯିବ कि मैच करबा कालकाटा सेशन, कालकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, पार्टीशन ऑफ बेंगल। अच्छा पार्टीशन ऑफ बेंगल कौन पे हेतिला मते कुह? एठी कोन केवल बेंगल को डिवाइड करिया पई से चाहूतिले ना कोन चाहूतिले? हिंदू मुस्लिम भितर रिफ्ट क्रिएट करिया पई चाहूतिले। वेरी गुड। आउ कोन? डिवाइड एंड रूल को अप्लाई करिया चाहूतिले। Indian Universities Act, control over education. Okay. Then next हो जो Official Secrets Act, press को restriction करिया को चाहूतिले। Calcutta Cooperation Act, reduce Indian control. Okay. तो इटा थिला। Then next हो जी तमरा Official Secrets Act एबे भी तमरा official कामरे लागू ची कि कोच किछि किछि जिंसो ऑफिशियल सीक्रेट एक्शन तमे शेयर कर परिबो नाही, जोटा कि तमरो काहा प्रति कॉन्ट्रैक्टेड करूची राइट टू इंफॉर्मेशन को। ओके, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ बेंगल। ओके 1905 again तार ऊपर क्वेश्चन आसला। इट वाज प्रपोज्ड बाय लॉर्ड कर्जन and implemented in October 1905. Yes, correct. East Bengal was a Hindu majority. अच्छा मते को ईस्ट बंगाल टा कोन हिंदू मेजॉरिटी थिला ना मुस्लिम मुस्लिम मेजॉरिटी हैला, मुस्लिम मेजॉरिटी थिला। एंड ऑफिशियल रीजन कोन थिला? एटा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पई तमाने करथिले डिवाइड एंड रूल। ओके, द रियल इंटेंशन वाज डिवाइड द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। ओके, तो एगुडा तमर ही इंपोर्टेंट थिला। एंड लॉर्ड कर्जन वाइस रहे थिले 1899 नु 1905 एंड जुलाई 1905 रे अनाउंस करथिले, इंप्लीमेंटेड करथिले अक्टोबर 1905 रे। ओके, एडा टिके देखि जिवो हैला। देन होची स्वदेशी मूवमेंट एंड आईएनसी सेशंस गुडा को जिबा हमें। स्वदेशी मूवमेंट वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन 7th August 1905 at Calcutta town hall. Yes, correct अछि। It promoted boycott of foreign goods and use of Indian goods. एडा भी करेक्ट अछि। तो एउडा किछि बुझार नाही। स्वदेशी मीन्स होछि कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करबा, इंडियन गुड्स को यूज करबा। Okay, 1905 Banaras session supported the anti-partition movement. Is correct. Swadeshi movement encouraged the import of British goods. Against man तार against ही statement टा जाउचे, तो फोर statement टा incorrect अछि। Okay, 1 2 3 तमरा कोन अछि? Correct अछि। तो not correct बचे अछि only 4 हबो। Then next हमें जिबा Surat session, split session आमाको कहि परबा। It was presided over by Rajbihari Ghosh and it was a split between the moderate and extremist. Moderate wanted mass nationwide protest. देखो एठी माने तमरो माने कोन देइची? Moderate कहूची कि mass nationwide protest ना, एटा काहर थिला? extremist मानकर थिला ना कि moderate मानकर हैला। and British followed a carrot and stick policy. की कहि परिबो carrot and stick policy कोन? की कहि परिबो? carrot and stick policy कोन? एनीवन ना केही भी नाही। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होची कि जदी मोर की गुणगान कला ना मु ताकू कैरेट खाइबा को देबे। ओके, आ जे मो अगेंस्ट रे गला तो ताकू मु कहि देबी कि से प्रोपागेंडा करूची हला, ताकू मु कहि देबी कि से गवर्नमेंट रे अगेंस्ट रे जाउची, ताकू मु कहि देबी देशद्रोही। ओके, तो एटा होची स्टिक पॉलिसी। ओके, सो ब्रिटिश followed a carrot and stick policy. Yes, it is correct.
बट एठी जो तांकर मॉडरेट्स मानकर देछि मास नेशन वाइड प्रोटेस्ट एटा रॉन्ग हबो एटा हबो कहार एक्सट्रीमिस्ट मानकर ओके समस्त बुझी पारलो ना बुझी पारलनी बुझी हला हाँ मैम ओके 69 आमे 70 क्वेश्चन करबा देन एंड करबा सेशन को which of the following statements regarding the moderates and extremists is not correct moderates believed in petitions okay and constitutional methods yes correct achi extremists believed in direct action and mass participation yes correct moderates declared Swaraj as their immediate goal okay moderates मानकर immediate goal केबे भी स्वराज नथिला ओके से माने कहतिले धीरे धीरे हमको स्वराज मिलु धीरे धीरे से माने देखंतु टाइम लागु पछे हमको दियंतु किंतु एटा काहार थिला इमीडिएट गोल एक्सट्रीमिस्ट मानकर कि हमको दरकार बहुत हेगला एबाउ हेई परबो नाही हमको स्वराज दरकार ओके एक्सट्रीमिस्ट एनकरेज्ड पर्सनल सैक्रिफाइस फॉर द नेशन यस से माने कहतिले कि हमें पर्सनल सैक्रिफाइस बजे दबु किंतु हमको स्वराज दरकार हमको इंडिपेंडेंस दरकार बुझियला एंड एथरे के जिबे तमरो लाल बाल पाल जिबे एंड आउ के जिबे अरविंद घोष जिबे हला आउ के जिबे अरविंद घोष जिबे आउ के जिबे हो किछि मन रखुना पढुनो ना कोन हां आउ इटा मन रखिबो सुराट स्प्लिट होची 1907 ओके देन 70 क्वेश्चंस वंदे मातरम जर्नल की करथिले बिपिन चंद्र पाल ओके स्वदेशी स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी की करथिला पिल्लाई वीओ चिदंबरम पिल्लाई ओके स्वदेश बंधव समिति के अश्विन कुमार दत्ता सुदेशा गीतांधल सुब्रमण्यम भारती हला तो एउडा एउडा तांगर कंट्रीब्यूशंस की एक्सट्रीमिस्ट माने थिले तो सेगुडा तांगर अच्छा बाल गंगाधर तिलक 71 नो हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा अब भाबुची कि काली ही नेक्स्ट क्लास टा रखी देबी ओके काली रखी देले काली सार दबा एटा देन नेक्स्ट तापर कोन तमरो टेस्ट सीरीज डिस्कशन हबो ओके सो एबे हमें जिबा कि एक्चुअली मु तमानु कहया को चाहूतिली कि 1 मिनिट अच्छा तमनकर एबे जो प्रिपरेशन करूचो केमिति करूचो खाली मॉक टेस्ट गुडा को पढुचो ना किछि माने पढुचो माने को बुक्स कोन पढुचो ना किछि पढुनो केवल मॉक टेस्ट वेरियस इंस्टीट्यूशन पढि के जाउचो उड़ान कोन करूचो पढुचो तो बुक्स तो हाँ ओके तो मु कहूतिली कि आफ्टर प्रिलिम एबे तो प्रिलिम तमर कम डेज आउ रहिला तो हमें एबे आउ एते डिस्कशन करबा नाही आफ्टर प्रिलिम परे हमें जो गुडा का हमर करंट रे रहूची माने न्यूज रे रहूची जोडा तमर पई दरकार से करंट न्यूज गुडा का हमें डिस्कशन करबा गोटे गोटे सेशन करिकी मन समस्ते दरकार की जे दरकार मु करबे करबा ओके तो सेही सेशन में कौन होबो ये हमें गोटे टॉपिक सपोज धरले कि साबरीमाला टेम्पल ओके सेतरे सुप्रीम कोर्ट कौन कहूची तो सेटा हमर सिलेबस रे को पार्ट रे ताको हमें एग्जांपल सहित लिखि परिबा बा मेंस रे तापरे कौन क्वेश्चन आसीबो इंटरव्यू रे तापे कौन क्वेश्चन आसीबो तो सेटा हमें डिस्कशन करबा ओके एंड ता सहित मु केवल कहबिनी तम माने भी सेठी कहबो कि मैम एई जिंस गुडा को एठी दरकार एई जिंस गुडा को हमें इंटरव्यू रे एम्ति क्वेश्चन हे परिबो जदि तम माने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवो तो ताहले मु सार को एटा जणेबी कि सारा हमें जिंसडा नुवा जिंसडा करबा जे तम माने न कहबो न पार्टिसिपेट करिवो मते आगुआ कहि दियो मु सेशन करबी नाही अनि सेशन टा करिया पई भी मोर निज ये रे मु करबे
ହେଲା କି ସେଇଟା ମାନେ ତ ମାନେ ସାର୍ ଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ହଇରାଣ କରିବିନି କି ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ହିଁ ବନେଇବି ହେଲା। ତ ତୁମେ ଯଦି ରାଜି କି ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବୁ, ଆମେ ଏଇଥିରେ କାମ କରିବା, ମିଶିକି କାମ କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ବେନିଫିଟ ହେବେ ସମସ୍ତେ, ତ ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଛି ବା କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ୟାନେଲରେ ବି ବସିଛି, ସେଠି ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଫ୍ଲପ୍ କରନ୍ତି କି ହଁ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନୁ କି ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନୁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତମମାନେ ଏକାଥରେ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ ନେଇକି ଯାଅ, ନା କି ପ୍ରିଲିମ ହେଇଯିବ ମେନ୍ସ ରେ ହବନି ହେଲା। ତ ସେମିତି କରିବାନି। ତ ସମସ୍ତେ ଯଦି ରାଜି ତାହେଲେ ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ଅଛ ସମସ୍ତେ ହଁ ୟେସ୍ ମାର, ଦେଖିବାକୁ ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ଚାହୁଁଛି। ଓକେ 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 ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ଏଠି ଯୋଉ ବି ପିଡିଏଫ୍ ପାଇବ, ଯୋଉ ବି ତମେ ୱେରେ ପାଠ ପଢୁଛ, ସେଟାକୁ ଡୋଣ୍ଟ ସେୟାର ୱିଥ ଏନିୱାନ୍ ହେଲା। ମୁଁ କହୁନି ଏଇଟା କି କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ, ଇଭେନ ତମ ମାନେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି କର ନାହିଁ, ବିକଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ। ଏଠି ତମେ ଯେତେ ଭଲସେ କରିବ ତମେ ହିଁ ଆଗୁଆ ଯିବ, ତମେ ପାଇସାର ତାପରେ ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା କର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇନି ତମେ ଏଇଗୁଡାକ କିଛି ସେୟାର କରିବନି ହେଲା। ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ଏଠି ଅଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ ହବ, ବୁଝିହେଲା। ସୋ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଫ୍ଟର ପ୍ରିଲିମ, ଆମେ ପୁରା ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ସେସନରେ କଥା ହବା, ଦେନ୍ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଆଜିର ସେସନ ବନ୍ଦ କରିବା ଏଇଠି, ତମମାନେ ପଢ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଡିସ୍କସନ ହେଲା ଆଉ 30ଟା ତମର ରହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ହାଫ ଆନ୍ ଆୱାର ଲାଗିବ, ମୁଁ ସାରିଦେବି କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ, କାଲି କରିଦେବି ନହେଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ସୋ ଆଉ କଣ ଅଛି ଡାଉଟ? ନା ମ୍ୟାମ୍, ଖାଲି ଟିକେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି? ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଛି? ହଉ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଡିସ୍କସନ କଲା ବେଳେ କରିବା, ତମର ତ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ସେସନ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଉ ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁ ଆପଣ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ମିଡିଏଭଲ ଟା ଆପଣ ନେବେ ନା, ତ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିନେବେ। ସେତେବେଳକୁ ଥ୍ୟୋରୀଟା ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏନସିଏଣ୍ଟ ଟା ଆମେ ତ କଥା ହେଇଥିଲୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଉ। ୱାରିଂ ନାହିଁ, ଏନସିଏଣ୍ଟ ନହେଲେ ମାମୁ ନେବେ, ସେତେବେଳକୁ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ କରିନେବେ। ସାର୍ ମ୍ୟାମ ନେବେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ନେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଡେଲି କ୍ଲାସ କରିବା, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ହୋମୱାର୍କ ଦେବି ସେମାନେ ପଢିକି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ନେବି। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ହିଁ ମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଇଏ ଭିତରେ ଅଛ କି ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ରେ କଣ ପଢା ହଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଏଟେ ହେଲେ ବି ପୁରା ପ୍ରପର ୱେରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ତମମାନେ ତାର ମାନେ ଅପ୍ ଟୁ ମାନେ ଯେତିକି ତମେ ତାର ହେଲ୍ପ ନେଇପାରୁଛ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ନେଇପାରୁଛ, ନେଇକି ଏ ବର୍ଷ ପାର ହେଇକି ପଳାଅ, କାରଣ ଏତିକି ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ପାର ହେଇକି ପଳାଅ ହେଲା। ସାର୍ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ତମମାନେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ତମ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କୁହ ଜଏନ କରିବେ, ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢିକି ଯାଅ, ଆଉ ରୁହନି ଏ ଲାଇନରେ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଯଦି ପଢେଇବି ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୁଁ କ୍ଲାସ ନେବିନି। ଓକେ ଚାଲ ଓକେ ବାଏ ବାଏ ମ୍ୟାମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ହାପି ପଣା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ହଁ।